अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैठा हूँ मोइन खान के साथ। मोइन खान डिफरेंट एजेंडा। मोइन और मैं कजन्स भी हैं, और दूसरी जो हमारे में कॉमन चीज़ है, हमारा पैशन फॉर बाइक्स। मोइन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोइन ने इस तरह की चीज़ें की हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि कौन लोग करते हैं चीज़ें। ये सैन फ्रांसिस्को से लाहौर 40,000 किलोमीटर्स की राइड इसने बाइक पे किया है। फिर इसने स्कूटर पे पाकिस्तान के नॉर्थ पे गया, सोहराब पे इस तरह ऊपर नीचे। और रिसेंटली इन्होंने स्पीड फेस्ट किया था, मोटो जीपी, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। मैंने भी अटेंड किया, इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट। और मुझे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये किस तरह ख्याल आया कि मैंने जो है ना, मैं 40,000 किलोमीटर जो है मैं मोटरसाइकिल पे पाकिस्तान आऊँगा। ये जहन में सोच किस तरह आती है क्या? आई थिंक बचपन से एक आई एम श्योर अपब्रिंगिंग प्लेज अ बिग रोल इन दिस। बचपन से बताया गया था घर में कि सिर्फ वो करना है जिस चीज़ का आपको शौक है, और बाकी लोगों को देख के जो वो कर रहे हैं बस उनको फॉलो नहीं करना, आपने अपना पैशन ढूंढना है। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू लव डूइंग एंड देन डू दैट। सो मेरे जो वालिद साहब है वो इसमें बहुत ही ज्यादा फर्म बिलीवर है, बिकॉज ही डिडंट गेट अ चांस टू डू व्हाट ही ट्रूली लव्ड, व्हिच वाज यू नो ही इज पैशनेट अबाउट अल्लामा इकबाल। और उनका बचपन से था कि मैंने अल्लामा इकबाल के ऊपर पूरी जिंदगी रिसर्च करनी है, बट ही डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। सो उन्होंने ही मेड श्योर कि उनके सारे जो बच्चे हैं तीनों, उन्होंने वो काम करें जिससे उनको शौक है, और वो काम ना करें जिससे बस पैसे मिले। सो ये एक चीज थी जो बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स को whenever I get the chance to speak to parents or kids in different universities, I tell them कि बच्चों को enable करें, give them power to decide what they want to do। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पाकिस्तान में पेरेंट्स बहुत घबराते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है। एंड ये जो सैन फ्रांसिस्को टू लाहौर वाली राइड थी, आई वाज ऑन द मोटरसाइकिल सोलो फॉर 6 months। I crossed 22 countries, 40,000 kilometers. Um, the trip itself wasn't difficult. The difficult part is the most difficult part is deciding आपने ये करना है। और लोग में से पूछते हैं हार्डेस्ट पार्ट क्या था, तो मैं कहता हूँ घर से निकलना वाज द हार्डेस्ट पार्ट। जब मैं निकल गया 10th जुलाई 2011, जब मैं निकल गया मोटरसाइकिल पे बैठ गया एंड आई लेफ्ट माय अपार्टमेंट, उसके बाद सारा कुछ इजी था। बट उससे पहले जो 1.5 साल की प्लानिंग थी और पैसे इकट्ठे करने थे, दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट। एंड माय 2005 में जब मैं अमेरिका गया तो पाकिस्तान की सिचुएशन wasn't the best. There was always constant negative news out of Pakistan, and that used to bother me a lot. मुझे बहुत सैड था। मुझे मुझे लग रहा था मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए पाकिस्तान से कॉन्स्टेंटली नेगेटिव न्यूज आती थी। कभी बम फट रहे हैं और चीजें हो रही हैं, कराची की बुरी हालात थे, एंड देन आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो was shot dead. That was a big blow. So constant negative news over thing, that was very depressing. And me sitting in San Francisco, I always thought like I'm from the privileged class from Pakistan who got the opportunity to come to San Francisco and study. Like it felt like I had to do something for Pakistan ताकि international news में Pakistan positively show it. And initially the plan was to just ride my after graduation I was going to give myself a present कि मैं जाऊंगा San Francisco से Alaska and back। 1 महीने की राइड होगी, अबाउट less than 10,000 किलोमीटर्स, और मैं वापस आऊंगा और फिर कहीं नौकरी करूंगा और अपनी जिंदगी जीऊंगा जिस तरह बाकी सारे जीते हैं। बट दिस constant negative news out of Pakistan bothered me so much for the next few years that a year before graduation I was like, I'm gonna ride my motorcycle America से Lahore।
और शायद रास्ते में कोई इंटरव्यू ले ले या मैं किसी को बता दूं और फिर वो मीडिया में पहुंच जाए और फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी फ़र्क यूनिवर्सिटीज़ में वो अपने दोस्तों को कहेंगे कि ये एक पाकिस्तानी है जो आप देखते हैं मीडिया में वो नहीं कर रहा, वो एक मोटरसाइकिल चला रहा है. So I wanted, because when I was there, the only thing I could talk about was Coke Fest. Not Coke Fest, Coke Studio. You know, वो एक पॉजिटिव चीज थी उस वक्त पाकिस्तान से निकल रही. और भी बहुत ज्यादा चीजें और थी, बट वो इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाती थी. मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूँ कि मैं भी इतने साल बाहर रहा हूँ और एक कांस्टेंट आपको जो है, बिकॉज बाहर आप यू आइडेंटिफाई एज पाकिस्तानी, नॉट एज लाहौरी पंजाबी. आप पाकिस्तानी आइडेंटिफाई करते हो और पाकिस्तान में जो चीज़ होती है आपको बहुत इफेक्ट करती है. यू कैरी इट विद यू. तो यू बेसिकली टुक इट इनटू योर ओन हैंड्स के मैं जो भी कर सकता हूँ पॉजिटिव इमेजिंग के लिए अपने मुल्क के लिए मैं करूँ. और दूसरी बात है कि सबसे मुश्किल था टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. तो छलांग मारना मुश्किल होती है, वो कर लो तो बाकी देन थिंग्स स्टार्ट वर्किंग बेसिकली. लाइक यू सेड, छलांग मारना मुश्किल है. एक दफा आपने छलांग मार दी ना, फिर तो आपने कहीं ना कहीं लैंड करना ही है. तो छलांग मारना और वो डिसाइड करना कि करूंगा, बस मैं कर रहा हूँ ये. और डिफरेंट एजेंडा, मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान से प्यार हो गया था. इवन दो मैं एक यूएस सिटीजन हूँ, मेरा बस और मैं उधर 6 साल रहा फॉर स्कूल. मेरा बस नहीं उधर, आई कुडंट जस्ट लिव देयर. आई हैड टू कम बैक. और जब मैंने डिसाइड किया मैं वापस जा रहा हूँ, तो क्लोज दोस्तों ने, फैमिली ने बहुत कहा कि यार इधर से सारे लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान से, हालात नहीं ठीक है, थोड़े कुछ साल लगा, बेसिकली कुछ पैसे कमा के आई. अब वहां से तू अपनी एजुकेशन जाया करेगा, तू वहां से पैसे नहीं कमा के आएगा. तो मेरा बस पहले दिन से द प्लान वाज टू मूव बैक टू पाकिस्तान एंड मैं इधर कुछ करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए. और उस टाइम पे मैं 18-19 साल का था, मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, बट ये पता था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है. तो मुझे बताओ, अभी जो बात की थी कि माँ बाप को बच्चों को इनेबल करना चाहिए कि अपनी वो टू फॉलो योर ड्रीम, फाइंड योर पैशन. तो ये जो पैशन फाइंड करने वाली बात है, जो अब तुमने मोटो जीपी का जो ट्रैक लगाया है, एक फैंटास्टिक, अभी पिछले दिनों में रैली हुई है जो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, मैंने जाके देखा था, वो सो सरप्राइज बाय द स्केल ऑफ इट. कितना ह्यूज था, कितना बंदा आया हुआ था, फिर कॉन्सर्ट था, अली अजमत. इट वाज एंड इट रियली मेड मी फील वेरी गुड. क्या देखो पाकिस्तान में ये भी हो रहा है. मोटरसाइकिल जो मैं बड़ा पर्सनली बड़ा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और तो ये फाइंडिंग पैशन जो है, ये कुछ लोग होते हैं लकी जिन्हें पता था 10 years old कि मैंने ये करना है, लेकिन मुझे बड़ा टाइम लगा, बड़ा अरसा लगा है. एक मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू जाने के बाद मुझे जो है ना समझ आया कि यार जिंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है और क्या करना चाहिए. तो तुम्हारे लिए कब तुम्हें समझ कि यार मैंने दिस इज माय पैशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? इट्स अ सर्च, ऑफ कोर्स इट्स अ फुल ऑन सर्च. और मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही लेट पता लगा. और पूरी जिंदगी से लाइक मुझे मोटरसाइकिल्स का शौक था. छोटा सा था, मेरे कमरे में पोस्टर्स थे, वैलेंटिनो रॉसी का उसके पोस्टर्स थे, और हर चीज 46 थी मेरी. टोपी भी, वॉलेट भी, कमीज भी, पैंट्स भी. और मुझे लगता था कि मोटरसाइकिल मेरा पैशन है और उसको मैं फॉलो करूंगा और बस पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल चलाऊंगा. और फिर जब मैं सैन फ्रांसिस्को से निकला तो लाइक मोटरसाइकिल was a main thing, and then I was like पाकिस्तान की भी इसमें हेल्प हो रही है. तो but then when I in my that big ride I crashed in Romania. And मुझे लगता है कि अगर मेरा पैशन सिर्फ मोटरसाइकिल्स होता ना, तो उधर मेरी राइड खत्म हो जाती. बट मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में था. फिर डिफरेंट लोगों ने जिनको मैं कभी मिला था, कभी बात भी नहीं हुई थी, उन्होंने रैंडमली मुझे मोटरसाइकिल पार्ट्स भेजना शुरू किए. पोलैंड से मुझे किसी ने फ्रंट ब्रेक्स सिस्टम पूरा भेजा, मास्टर सिलेंडर, उसकी केबल्स, डिस्क्स, रोटर्स, पैड्स, एग्जॉस्ट सिस्टम आया बल्गेरिया से. 2 बड़े बॉक्सेस आए पार्ट्स के कैलिफोर्निया से, फ्रॉम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. और मैं उधर सोचा था कि यार मैं ये राइड कर रहा था कि मैं लोगों को बताऊं कि हम पाकिस्तानीज, वी मुस्लिम्स इन जनरल आर पीस लविंग पीपल. And I thought I'll face some negativity
from people around the world when I tell them from Pakistan. But here I was in a hospital, and these random people, random goras, were helping a Pakistani. It felt amazing, Sure. and I felt more connected to Pakistan than ever before in that hospital in Romania. And because of Pakistan, I had the energy and the determination and the willingness to keep pushing. So मैंने फिर वो पूरा बाइक जोड़ा and I rode it to Lahore. But still at that time I didn't know कि मेरा passion motorcycles नहीं है. After like a couple of years I realized कि motorcycle मेरा passion नहीं है. और वो that I realized, I think 2 years after the big ride, I was in Vietnam on a motorcycle. एक महीने के लिए मैं वियतनाम गया हुआ था, और I think after like the 5th day, मैं अपनी हेलमेट में हूँ, मैं वियतनाम के जंगल्स के थ्रू जा रहा हूँ अकेला, और मुझे एकदम हुआ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ. मैं मोटरसाइकिल ही चलाई जा रहा हूँ, और भी कुछ करना है जिंदगी में या बस मोटरसाइकिल ही चलाना है. और पहली दफा था कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मेरा दिल नहीं कर था चलाने का. But still, I went through the entire 28 days of motorcycling in Vietnam. मैं वापस पाकिस्तान पहुंचा और full depression के मैंने तो अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी है. मुझे पता ही नहीं है मेरा passion क्या है. और फिर like कोई 10 दिन काफ़ी बुरे गुजरे मेरे कि यार मुझे पता ही नहीं मुझे प्यार किस चीज़ से, और मैंने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी. और फिर उधर click हुआ कि असल में passion है पाकिस्तान, and motorcycle is just a small thing that helps me promote Pakistan. It's an avenue. It's an avenue for your goal. Motorcycling is just an avenue for me. मैं बस पाकिस्तान की image change करना चाहता हूँ internationally. The negative narrative that revolves around Pakistan, I want to change that. I want to challenge that. And whatever the international media portrays us as, I feel there's a lot more to of course us, Pakistan, Muslims in general, than what the media says. So this is just my little effort. A different agenda is just my little effort to challenge the media. So, और different agenda में और क्या कर रहे हो? Apart from the, अभी तो I mean this first of all जो MotoGP भी हुई है, ये international press में cover हुई है. It's getting a lot of giving Pakistan a lot of good press. कि ये interesting चीजें कर रहे हैं, और I mean you're giving an avenue to a lot of bikers जो हमारे I mean पाकिस्तान में बाइकिंग में स्किल तो बहुत है, जो रोडों पे रात तो कर रहे होते हैं with no safety gear, no anything. So you're giving them an avenue to ये जो एक आवारा गर्दी जो एक है उसको एक चैनल करके एक लाइवलीहुड है, एक पैशन को फॉलो करना है. कल को इंटरनेशनल स्टेज पे जो है ये पाकिस्तान का नाम बनाएंगे. सो रियली इट्स इंशाल्लाह इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट. तो उसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट? सो डिफरेंट एजेंडा, तो नाम के पीछे क्या है? व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड द नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स? आई थिंक व्हेन आई वाज इन सैन फ्रांसिस्को आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ नेम for my big ride, and I was thinking on more commercial lines. Just वो Charlie Booman or Ewan McGregor की एक ride थी, The Long Way Round. So I was thinking I'll do something like A Long Way Home or something. But then the agenda was very clear from the start. The agenda was to educate people by letting the world meet a Pakistani for the first time. So I met thousands of people in those 22 countries where they had never met a Pakistani. They didn't know anyone who had met a Pakistani. And these people invited me to their homes, and they accepted me. They accepted a Pakistani, they accepted a Muslim, and I think now things are getting better. But in 2010, 2011, we were very notorious in the media. And still people were accepting me and bringing me to their houses, feeding me, giving me a bed to sleep. It felt amazing. I was like, I could own Pakistan for the first time. I didn't have to care what the world was saying about me. It was all about what that person was thinking about me in that particular moment. तो वो है ना कि बड़ा important point के लोगों को सिर्फ पता है जो टीवी में देख रहे हैं, और
वो बढ़ा चढ़ा के out of perspective. So the first time they met, एक उनके लिए भी I'm sure बहुत impact किया, you know, because होता ये है कि जब आप किसी से पहली दफा मिलते हो, so generally people are good. People are good human beings. They saw you हमारे मुल्क आया है किसी और मुल्क से, and it seems like a nice guy, seems like a normal guy. So people really give love. And it really makes you, I'm sure it made you feel कि यार मैं in my own small way, I am making a positive difference to the perception of my country, of my religion, and it must have really empowered you. Absolutely. It was sometimes it's hard to find words to explain how I felt in those 6 months I was on the road. But the people anywhere I went, I've been to I don't know, around 40 countries. People were just so genuine. They everyone just wanted to help. A lot of people want juice from me, you know. They're like, क्या कुछ बुरा हुआ था, कोई अजीब सी चीज हुई थी. तो if you look at like that, तो टूर बहुत ही बोरिंग था, इसलिए कि मैं एक भी बुरे इंसान को नहीं मिला, एक भी. और I went through like some bad parts. So there are bad parts in every country. There are bad areas in every country. You can't go to Compton in LA or Southside Chicago or, you know, European countries में different areas है where, you know, gypsies रहते हैं, वहाँ पे ज़रा situation इतनी मज़े की नहीं है. But I went through those areas as well, and Southside Chicago बहुत notorious है, so I went there to see. And it was just like another place. So इसी तरह पाकिस्तान भी वही है. You know, पाकिस्तान में भी मसले हैं, और मैं कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान is perfect. पाकिस्तान में भी मसले हैं, मगर हर मुल्क में मसले हैं, हर इंसान में मसले हैं, हर चीज में मसले हैं, और अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर चीज है. But generally, there are more good people than bad people in this world. Everyone is out there to help you. If you ask somebody for help, it's very difficult कि आपको कोई, it's very rare कि आपको कोई कहे जी मैं ये नहीं कर सकता आपके लिए. You know, लोग आगे निकलते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी. That's my experience. But हम हेल्प मांगते नहीं है ना, कहीं हेल्प नहीं मांगनी तो शर्म आती है, अन्ना का मसला नहीं बनाना. अगर कुछ चाहिए तो बस मांग लो, और फिर वो, you know, हो जाएगा. और एक बंदा नहीं करेगा तो अगले बंदे से कर लो, you know. और मैं तो अब ढीठ हो गया हूँ. मैं तो जब मुझे कुछ चाहिए होता है और मुझे लगता है कि एक बंदा वो दे सकता है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ. बस तो होना चाहिए ना, because you see, अगर मैं किसी को हेल्प करता हूँ, I feel good about myself. तो people are really out there to help. Absolutely. अच्छा, मुझे बताओ, तो तुम्हारा then, you know, through the ride itself or through the last few years, where जो तुम पहाड़ों पे जा रहे हो, और तुम, it is a different agenda. जो तुम चीजें कर रहे हो वो नॉर्मली लोग नहीं करते, या कहते हैं कि भाई ये शौक है, खेल कूद है, बड़े हो गए हो. तो इसमें डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट, व्हिच इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, वेयर देयर इज नो सेफ्टी नेट. आपको नहीं पता कि इससे चलेगा नहीं चलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 40,000 किलोमीटर राइड कर रहा हूँ. आई मीन, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज डन एवरी डे. तो इन चीज़ों में आपका व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड, हाउ इज इट मेकिंग यू मेंटली स्ट्रांग, कैरेक्टर किस तरह बिल्ड हो रहा है आपका अपने बारे में, बिकॉज आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ. A, doing the ride. B, doing something like this, motocross kiya. C, taking people to Baltistan on Vespas. So, how does it change you in terms of your strength, in terms of characteristics? क्या positive change आते हैं, और क्या चीजें हैं जो which are transferable, कि लोग जो, you know, if I'm listening to this thing which I can take away कि यार in terms of mental strength, for example. I think for me सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो है सेल्फ बिलीफ. और अगर आपने कुछ करना है, मुझे लगता है ये टैलेंट डजंट एग्जिस्ट. आई थिंक ये टैलेंट सारी बकवास है, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. द राइट वर्ड इज ऑब्सेशन. इफ यू जुनून, अगर आप ऑब्सेस्ड हो किसी चीज के बारे में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता. आपकी अपनी बॉडी भी नहीं रोक सकती अगर आप ऑब्सेस्ड हो इधर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं शौक बिल्कुल भी जिम जाने का या अपना ख्याल रखने का. मैं ना, आई डोंट रन, आई डोंट गो टू द जिम. मैं बहुत अनफिट हूँ. एंड 2.5 years ago मैंने एक बाइसिकल राइड की थी, सोराब साइकिल पे. नो गियर्स, रियली अनकंफर्टेबल, कंप्लीटली स्टॉक. आई डिडंट मेक इट कंफर्टेबल फॉर माई सेल्फ.
I rode a bicycle from the China border Khunrab pass to Karachi. Or this was 2608 kilometers. I was on the bicycle non-stop for 81 days. और I think after that you got fit. शायद थोड़ा सा, बट मैं रोया पूरी थ्रू आउट द 81 days क्योंकि मैं बहुत अनफिट था. बट आई वॉज एबल टू डू दिस बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ कि मैं ये करूंगा और ये होएगा. सो आई थिंक आप कभी भी कर रहे हो ना कुछ, तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो आपके माइंड में आती हैं कि यार ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज खराब हो जाएगी, मैं बहुत अनफिट हूँ, पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं. मगर I was able to do the bicycle ride because I believed in it 100%. I was so obsessed about it that I was eating, sleeping, breathing this bicycle ride. I was preparing my brain for months in advance कि मैंने ये करना है और I'm not going to quit no matter what. So self-belief I think is the most important thing. And अगर आप किसी चीज के बारे में obsessed नहीं हो ना, तो आप नहीं कर सकते. I was so obsessed about the motorcycle ride from San Francisco to Lahore कि मैंने 18 महीने I survived on boiled rice and ketchup because I was saving money. So 18 महीने मैंने boiled उबले हुए चावल और ketchup खाई. दिन में 5 दफा खाता था मैं, उसके 5 डब्बे बनाता था और मैं वो boiled rice और ketchup खाता था, इसलिए I was saving money for this ride. 18 months में I didn't take a single day off. Even Saturdays and Sundays I was working. I was working about 80 hours a week. एक swim school है, Dhaka swim school, उधर मैं full 40 hours काम कर रहा था. And then I was working another 40 hours at a secret builders startup company थी उधर Bay Area में. उधर I was doing some marketing stuff for them. And then I was running my own private swim school on Saturday and Sunday. I was working 10 hours each day. So 80 hours a week, I was completely booked. That 18 months, no friends, no hangouts, no movies, no restaurants. It was just calm, paise jama, aur phir ride. I was so obsessed about it that I wouldn't eat for days. I wouldn't sleep for days. It was just मैंने मोटरसाइकिल चलाना है, मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने मोटरसाइकिल चलाना है. It was just that. And I think अगर आपका वो क्रेज इतना ज्यादा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो. और मुझे लगता है कि if you obviously बच्चे ये ना करें, but मुझे लगता है कि अगर आप बिलीव करते हो ना कि आप छत से छलांग मारोगे और आप उड़ोगे, तो मुझे लगता है शायद मैं उड़ जाऊंगा. बट मैंने उसको बिलीव करना है और मैंने उसके बारे में ऑब्सेस होना है. तो पॉइंट है कि आप हर चीज कर सकते हो. तो बड़ा I mean and I completely agree with that. अगर तुम्हें वैसे कहना कोई कि साल 1.5 साल सिर्फ चावल खाने नहीं खा सकते, लेकिन बिकॉज एक गोल है, एक टारगेट है, उस टारगेट के लिए अगर आपको उसमें बिलीव करते हो, आपका जुनून है, तो आप कुछ भी कर लोगे कि भाई ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो करना है. So you are compromising on everything to get to your goal. Absolutely. तो और फिर सही कह रहे हो जो कहा है कि भाई there is 1,000 reasons to not do it. सोच ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, मसला हो जाएगा. And it's not कि you had complete belief and you know कि there will be no hurdles. There will be hurdles, but because you have the belief, you know कि I will one way or the other overcome all the hurdles because मैंने ये करना है. Absolutely. And I also believe you only lose when you give up. So if you don't give up, you never lose. You learn. You learn, absolutely. So the bicycle ride, so now in Pakistan, I do one silly thing every year. And every year, the silly thing is, you know, the big ride or the bicycle ride or the scooter ride. The bicycle ride was very silly. It was, absolutely. But, you know, these silly things now pay the bills. So I went to, I think, around 43, 42 companies and pitched them the idea. Till the 44th company said, we'll sponsor you. So पहले 40-42 कंपनीज के पास मैं गया और मैंने कहा मैंने साइकिल चलानी है and I'll wear your t-shirt and I'll promote your product whatever it is and like help me achieve this dream of mine to ride a bicycle across the country. पागल है, मतलब खुंजराब से कराची. Mostly companies said तुम fail हो जाओगे and it'll look bad on the company.
And I had to like really show them ke, you know, I'm not just some regular guy. I can put my life on the line. I can cross that Barrier, risk and threshold, recklessless line जो होती है ना, that you shouldn't cross too much in your life. I can cross that when I'm obsessed about something. And I told those 42 companies that I will do this no matter what. Even if I have to crawl on my knees, I will do this. You don't ever have to worry about okay, Moin will give up. And I failed 42 times because those companies just didn't want to sponsor me. And then the 43rd wow. said, okay, we'll sponsor you. So giving up is, you only lose when you give up. Our Prime Minister is a prime example who hasn't given up his entire life. And he's an inspiration to us. Took him 20 years, like It took him way more than 20 years to where he is now, you know. वो बचपन से उस बंदे का एक और ही level था. And you know, I try to stay away from politics when I'm talking about a different agenda, because a different agenda is about Pakistan and nothing else. But our Prime Minister is a role model, and we should learn from him. तो मुझे बताओ, अच्छा ये तुमने बात किया ना कि एक सोच लो, पहले आपको एक गोल बनाना है कि ये मेरा गोल है, फिर सोचना है कि अच्छा एक गोल हो सकता है, किस तरह होएगा. ये नहीं कि पहले कि ओके व्हाट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल देन इट्स अ वेरी स्मॉल गोल. यू स्टार्ट विद व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय ड्रीम, एंड आइडियली इट्स अनरियलिस्टिक. Doing 40,000 kilometers is unrealistic. It's ridiculous. Sohrab पे इस तरह 2,000 किलोमीटर unrealistic है. लेकिन तो जब एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कहा था मुझे कि देखो आप स्पोर्ट्स तो no way, but you also won't ever run. And उन्होंने कहा था कि in September 2019, which is 14 months after the surgery, you might be able to walk without a walking stick. But मुझे होती थी घबराहट कि यार मैं, this is something which being very sporty, it's something which I couldn't reconcile with. So I decided कि मैं अपने 1 year anniversary पे एक्सीडेंट की भागूंगा. यार, when I saw that this post of yours, you decided after this horrible crash of yours, मैंने जब पढ़ा कि you're planning to run for you know the 5K run, I was like, यार, we need more people like this who want to bounce back from a tragedy. Well, halat to bad shit will happen. Of bad course, things will happen. Bad stuff will happen, and bouncing back shows you know आप किस you know what you are made of. And I was absolutely impressed and inspired by that one post of yours. And I would absolutely love, and it'll be my honor if I can run the 5K with you. तो तेरा कजन भाग रहा है ना, Modi? हाँ, बस मैं भी भागूंगा. Modi said to me that he will do it on when the same exactly day. is the 20th July. 20th So July. accident was 18th July. 20th July is the weekend, Saturday को, and inshallah, so we raise some money for a sports center. The idea being कि मैं तो कभी sports नहीं खेल सकता, लेकिन अगर इस हादसे की वजह से किसी और को फायदा हो जाए, it makes it more meaningful. Of course. On a very selfish basis, it makes it more meaningful. And जब मुझे उन्होंने कहा था नहीं भाग सकते, तो then I could have either accepted what they said, या मैंने कहा let's take things in my own hands. मैं पूरी कोशिश करूँगा. And नहीं भागता, it's, I don't know. I mean, it's very difficult. Rods लगे हुए, उन्होंने कहा नहीं भाग सकते, but end of 1 year ये नहीं होना चाहिए कि while you could have tried more. मैं full कोशिश करूँगा, and then let's see. So I exercised harder than I needed to, harder than I was. कहते थे घंटा करो, मैं 3 घंटे करता था. And उससे जो right now the run is almost secondary from the point of view कि it gave me so much motivation, it gave me a goal कि तूने exercise करनी है. जो कि आप बोलते हैं मैं क्यों कर रहा हूँ यार, मैं exercise है कि just raising your leg. You know, I might get to a place where I might walk. Is it worth it? लेकिन once you get that goal, and once you start doing it, you also understand कि मेरे में कितनी strength है. You understand मेरे में कितनी capability है. कि it is unrealistic, but I might get there. And getting over the hurdles, overcoming the challenges. तुम्हारी याद है मुझे तुम्हारी जब you got your leg injured in Romania. And I mean I would see your videos के बर्फ पड़ रही है, sleet में तुम
तुमने अपने जूते के नीचे तुमने वो लिफाफे पहने होते थे इंसुलेशन के लिए. I mean, so regardless of getting to Pakistan on your bike ride, just the process must have given you so much confidence in yourself. तुमने जो बात है कि छलांग मार सकते हो छत से, it's self confidence, right? कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Of course. So वो जो चीज़ जो है ना कि don't limit yourself. कि नहीं जी ये मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा जॉब स्कोप ये है. This is what I can do. No. What do I want to do? Yeah. Then ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी capabilities हैं. How do I bridge them? So वो बड़ा ज़रूरी है because otherwise we keep on limiting ourselves. And you are a prime example of somebody who did not limit himself with practicalities. But 10 years ago, when I got to Pakistan from the big ride, I wanted to do more for Pakistan. So I started inviting people from all over the world to come check out Pakistan, you know. And this is how I would say, I was like, you gotta come check out Pakistan. This is the coolest country. And so a lot of people were scared. But a lot of people were scared and nobody wanted to come to Pakistan. But I only wanted to do that. And I was able to do that at that time because I wasn't doing it for money. The main goal was much bigger than money. If I only wanted to make money, I would have opened a clothing online store or something, you know. बड़े धंधे जो आप कर सकते हो. And then during that time एक कहीं अटैक होता था मुल्क में, कहीं नीचे बलूचिस्तान में, कहीं दूर, तो टूरिज्म इंडस्ट्री डेड हो जाती थी. But पिछले since 2011, since I've been back, I've been doing summers is I don't make money off of these tours, barely any. It doesn't pay the bills. But it's 6 महीने मैं पाकिस्तान को ना अपना time देता हूँ, and in my head it's like I'm giving zakat to Pakistan. And I give my time, I invite these people over, और वो पाकिस्तान आते हैं, फिर वो देखते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं कि ये इतना ज़बरदस्त मुल्क है. The world has been scaring us away from Pakistan for so many years, and then because of me they know the asliyat, they know the reality, and it just makes me happy. So if you do something that you truly love to do, money doesn't matter. And when you do something you truly love to do, and if you do it a lot, if you put 10,000 hours in it, you'll be good at it. If you're good at something, then people will pay you to do it even more. So ये मैं एक prime example हूँ. I had no idea where I wanted to be, but I knew firstly I want to do something for Pakistan. I want to promote Pakistan. I want to show the world a positive side of Pakistan. That's why I did the big ride. Then I started doing tours. कई दफ़ा tours होते थे उसमें बस एक बंदा है. But I have a support vehicle. उसमें एक मैकेनिक है, एक हेल्पर है, एक गाड़ी पीछे आ रही है, हम बाइक पे हैं, और एक बंदे के साथ I can't even break even. But the idea was never to make money. The idea was to do what I love to do. पैसे खुद आएंगे. पैसे आएंगे, जो लिखा हुआ है वो तो आना ही आना है ना, जो मर्जी कर लो. You know, जो अल्लाह ने लिख दिया कि ये पैसे मोइन को मिलने उसकी इस जिंदगी में, तो वली खान कुछ नहीं कर सकता. You know, so यहाँ से नहीं कहीं और से वो पहुंचा देगा. तो ये जो fearlessness है ना, ये मुझे लगता है जिंदगी में बहुत जरूरी है. ये डर के जीना. और it was very weird to see other Pakistani students in San Francisco choosing a major based on के starting salary क्या मिलेगी. तो कई बॉयज थे, वो गर्ल्स एंड बॉयज में उनसे डिस्कशन हो रही है जी कि क्या मेजर है आपका, तो वो कहते थे जी हम तो ये अकाउंटिंग में जा रहे हैं, इसलिए कि इसकी स्टार्टिंग पे इज $80,000 a year. और हम वो चीज़ नहीं कर रहे, हमें उसका शौक है बट वो नहीं कर रहे क्योंकि वो सिर्फ 30,000 a year है. पैसे डोंट मैटर एट ऑल. अगर आप वो 80,000 वाली, आपने अकाउंटिंग पढ़ ली है पूरी जिंदगी बट आपको शौक म्यूजिक का है, तो आप कर लोगे, बट आप खुश होगे एंड ऑफ द यू नो. एंड what's in my head is कि when I'm really old and I'm on the deathbed, I will not remember कि जी मेरे पास बहुत बड़ा घर था और मेरे पास लैंड क्रूजर थी.
मुझे याद आएगा कि मैंने मंगोलिया में 10 दिन एक घोड़े के साथ अकेले गुजारे थे, और मैंने पाकिस्तान का कुछ के लिए कुछ किया था। ये चीजें याद रहनी है। ये मटेरियल चीजें आपके साथ कब्र में नहीं जानी, आपके कफन के साथ जेबें नहीं लगी होंगी, आपका पैसा आपके साथ उधर नहीं जाना, बट ये जो मेमोरीज हैं और जो आप एक लेगेसी छोड़ के जाओगे, दैट विल लिव फॉरएवर। तो ये जो फेयर ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जो है, दिस इज अ वेरी बिग इशू। कि आप डर के थ्रू आप करते हो, पूरी जिंदगी डर के थ्रू गुजारते हो, और आपने जो 8 घंटे सोते हो, 16 घंटे उठते हो, 16 में से आपके 11-12 घंटे आर वर्क, and so your main thing you're doing in life is work, and if it's not something you चलो love ना करो, if it's something you don't like, then you're spending your whole life doing something you don't like to make money. And like you said, अगर आप कुछ कर रहे हो जो आपको शौक है, आपको पसंद है, you'll be good at it eventually, and you will make money. So it's very important to change the perception of decision making from fear based to समथिंग पॉजिटिव कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मेरा क्या गोल है इसका, और थिंग्स हैपन, एब्सोल्युटली थिंग्स हैपन। एंड हमारा एक इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान, हर जगह पाकिस्तान में ज़्यादा है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बच्चा पैदा हुआ है ये बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर अगर नहीं किसी ने डॉक्टर बनना तो इट्स अ वेरी हॉरिबल लाइफ। हाँ, अगर डॉक्टरी का शौक है तो आप पूरी रात हॉस्पिटल में, बिकॉज बट यू लव इट, इट्स नॉट वर्क। Now, what you're doing is, it's very painstaking, it's time consuming. अभी जो तुमने स्पीड फेस्ट लगाया था, इस पे जो I can imagine the organization going behind this, the effort going behind this, it is all very hard work. And if you don't love the end goal, it must be horrible. अभी ये है कि ख्वारी है, like eating rice and ketchup every day, बहुत ख्वारी है, लेकिन आपको पता है मैं क्यों कर रहा हूँ। And it makes it all bearable. It makes और जब आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, तो फिर वो ख्वारी नहीं है। I was happily eating rice and ketchup because a goal था for 1.5 साल, और मैं केचप के भी पैसे नहीं देता था। मैं उधर किसी मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग की जाके ले लेता था, और एक बोरी लेता था every 3 weeks कॉस्टको से जाके बल्क में चावलों की, जो मैं बस रात को उबालता था, फ्रिज में रखता था, सुबह उठ के माइक्रोवेव और चलो जी। तो when you see that goal in front of you कि आपने बस वहां तक जाना है, तो बीच में जितनी भी चीजें हैं ना, वो ख्वारी नहीं है। और वो चीजें they make you. Of course. Getting to the goal doesn't make you. Going through all the hurdles and the loops, वो challenges जो आते हैं, जो ख्वारी आती है, वो आपको फिर बताती है कि मेरे में कैपेबिलिटी क्या है, मेरे में स्ट्रेंथ कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ। और इंसान में बहुत कुव्वत है, बहुत सलाहियत है, जो हम कभी टैप ही नहीं करते, बिकॉज हम कंफर्ट जोन से निकलते ही नहीं है। एंड व्हाट यू डूइंग इज रियली गेटिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि इंशाल्लाह तुम्हारा जो तुमने स्पीड फेस्ट किया है, तुम जो आई मीन द प्लान्स यू टॉक्ड अबाउट, किस तरह बड़ा होएगा, किस तरह पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इवेंचुअली इंशाल्लाह दिस विल बिकम वेरी वेरी बिग। पाकिस्तान से लड़के जो हैं मोटो-क्रॉस के लिए जाया करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। The goal is Dakar Rally. I'm gonna train and help them get training from international riders, pro racers from around the world. I want to be a part of this, and पाकिस्तानी एक टीम तैयार करनी है जो जाएगी डैकार, और वो शायद अभी वो जो टीम है शायद अभी पैदा भी नहीं हुई, या शायद अभी 10 साल के हैं वो बच्चे, बट मैं उन बच्चों को डैकार में देखना चाहता हूँ और उनके बाइक पे एक पाकिस्तानी झंडा देखना चाहता हूँ। That's the big goal. And so it circles back to जब साइंस में तुमने सोचा था मैंने कुछ करना है, पॉजिटिव इमेजिंग करनी है, you started off at a very personal level कि तुम कर रहे थे, and now through you there can be so many Pakistanis in the next 10, 20, 30, 40, 50 years, even after you and I are not here, who will be inshallah representing Pakistan in a positive light through your platform. Absolutely. And that is the legacy you want to leave. And in the end nobody cares कि यार इस बंदा जब मरा है तो कितनी जायदाद थी इसकी. Of course. लोग people care कि ये बंदा जो है इसने मेरी जिंदगी को
कैसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया, इसने सोसाइटी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, वो लोग याद करते हैं, वो लोग दुआएं देते हैं लोग उन चीजों के बारे में, नॉट कि दिस गाय मेड आउट मनी फॉर हिमसेल्फ, नोबडी केयर्स, एब्सोल्युटली नोबडी केयर्स। और आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स भी जो है यू कैन मेक देम as less as possible. इंसान बड़ा flexible है. You don't need too many things to survive. And no, Moin, it was fantastic. It was a pleasure. Thank you, sir. Please follow Different Agenda. आप नीचे देख रहे हैं इनके social media tags. He's an inspiration to me, and I think he is somebody who can really be an inspiration to all of us. If not anything else, just from the point of view कि अगर आप किसी के बारे में passionate हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप कर सकते हो. आप में बहुत कुव्वत है, आप में बहुत सलाहियत है. अल्लाह ने हमें बहुत इन्नेट सलाहियत दी है जो हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते बिकॉज हम तो डब्बे से नहीं निकलते. डब्बे से निकलें, कंफर्ट जोन से निकलें, ट्राई करें जो आप करना चाहते हैं. एंड एज मोइन सेड, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर. यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, यू फेल ओनली व्हेन यू गिव अप. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मोइन. Thank you so much for having me.